Sir, please more time. You need more time. Yes, sir. क्यों? इसमें तो स्ट्रक्चर बनाना है ना, सिर्फ एक करके बता दें क्या आप लोग को? कितना आसान है बताइए। Yes, sir. Please. एक करके बता दें। देखिए, सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द पेरेंट, ओके, और यू विल आइडेंटिफाई द पेरेंट। बताइए पेरेंट कौन सा है यहाँ पे? इन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरेंट? टेल मी गाइस। ब्यूट। ब्यूट, करेक्ट है ना? ये आपके पास, दिस इज योर पेरेंट ब्यूट। ब्यूट मतलब हाउ मेनी कार्बन्स? 4। 1 2 3 4, ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे बताइए, नाउ यू हैव टू ऐड द सब्स्टिट्यूएंट, ऐड कीजिए आप। सेकंड नंबर पे मिथाइल। आप नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, ये आप नंबर रख लिया आपने 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड नंबर पे मिथाइल, दैट मींस सेकंड नंबर इज हैविंग CH3। गिव मी अ सेकंड। सेकंड नंबर इज हैविंग CH3 ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद 2 इन है आपके पास, दैट मींस डबल बॉन्ड भी कहां पे? सेकंड कार्बन से थर्ड कार्बन में। दैट्स इट, गॉट इट। Yes, sir. अब तो और कुछ बचा नहीं ना फंक्शन। ये ब्यूट हो गया, मिथाइल हो गया और EN हो गया। देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। गॉट इट? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, ठीक है। चलिए, तो अब एक और सवाल रहेगा आपके पास। आई एम गिविंग यू। चलिए, तो हम डाल देते हैं, ठीक है। एक और सवाल कीजिए फिर। खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। एंड आकिब एंड रशिता, प्लीज टर्न योर कैमरास ऑन। Okay, sir. You guys have 2 minutes more.
अस्सलाम वालेकुम आमना. Muslim sir. What happened, Amna? You are late. Guys, just 20 seconds remaining. What हाँ are you आमना. doing? What are we doing? अच्छा आपको सवाल नहीं दिख रहा है. Write the structures of following compounds. Okay. The name has been given. आपकी तबीयत ठीक है आमना? Yes, sir. Okay. Shiroza, can you change your name? हाँ, मेरे क्लास में कोई शिरोजा नाम का कोई भी नहीं है. There is no student by the name of Shiroza. I don't know who you are. Can you change your name maybe? Let me just see if you can change your name. Yeah. Now you can rename yourself. Okay, guys, Akib, Rishita, Khadija, those who are doing, please send me whatever you have done. Okay, sir. Okay. Rishita, send me whatever you have done now. Yes, sir. So this is Izan. Okay, fine. Okay, I've got some answer. I keep waiting for your answer. Okay, pre-nitroaniline, it is correct, Rishita, very good. Pent 4-ene 2-ol. Pent 4-ene 2-ol, very good. Correct. 3-nitrocyclohexane. साइक्लोहेक्सीन. ओ इसमें थोड़ा सा गलती हो गया आपसे. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. ओके. मोस्टली आप करेक्ट जा रहे थे वैसे. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. 2-मिथाइल ब्यूट. ठीक है, ये भी ठीक है आपका. ओह, थोड़ी सी आपने गलती कर दी पेंट 4-इन वाले में. आकिब, साइक्लोहेक्सेन में Okay, साइक्लिक sir. स्ट्रक्चर करना चाहिए था. Sorry, sir. साइक्लोहेक्सेन में साइक्लिक स्ट्रक्चर रहना चाहिए था ना. Yes, sir. ठीक है, चलिए ठीक है. लेट मी सी हियर. थोड़ा रुक जाओ. ओके, जस्ट वेट 1 मिनट. ठीक है, लेट अस सी नाउ. Kohli is actually on the verge of making century. He's on 91. He's on 92. And सर फिर India वो need स्क्रीन शेयर कर दीजिए. मजा स्क्रीन शेयर आएगा कर दें. देखने. सच में हाँ. बताइए, स्क्रीन शेयर कर दें. हाँ जी, क्या ख्याल है बाकी लोगों का? स्क्रीन शेयर कर दें. हाँ, रिशिता, ईजान, खदीजा, खुदेजा, टेल मी. सुडेश, क्या हो रिशिता? और किसी ने यार लिंक किया था, डेमार्कस नाम का कोई बच्चा आ रहा, बताओ.
स्क्रीन शेयर कर दें? Sir, aren't you screen sharing now? I am in screen share, but should I screen share the match? I'm seeing that. Oh, Just a second, let me pause. Yeah. So aniline is what? Aniline is a benzene ring which is having what group? NH2 group, right? Yes, sir. Yes, sir. And in the para position, we will have NO2. Correct? In the para position, we will have NO2. Simple. A pent 4-ene. So first of all, we'll make 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms. Then we will number it. Okay. So यहाँ से 1 start करते हैं. So 1, 2. So in the second carbon, we are going to have OH. Second carbon, we are going to have OH. And then we are going to have a double bond in the fourth carbon. So 1, 2, 3, fourth carbon. So there will be a double bond between 4 and 5 fifth carbon. They are giving whites, you know. They are giving whites now, but I don't know whether this was white or not. Now we have 3-nitrocyclohexene. So we have cyclohexene and 3-nitro. So you make double bonds anywhere. Then this will be the first carbon, this will be the second carbon, and then here is NO2. Third carbon, NO2. है ना? हाँ, ठीक है. हो गया. चलिए. Century done. I think he hit a 6 or something. Rishita is also watching cricket, I guess. Rishita is not. You're checking the scores? Okay. he got 103. I think he hit a 6, I guess. Let me see. What did he hit? He just moved inside. Yeah, Came on maybe a he situation was. where they need one, and he hits a boundary. Yeah, he hit a 6. Chaliye. India won the match. Kohli got his century. Very good. Okay. So this is your 3-nitrocyclohexene. Then we have cyclohex 2-ene 1-ol. Okay. So cyclohex once again. So cyclohex will be cyclohex like this. Then it is having 2-ene 1-ol. So let us suppose this is the first carbon atom. इसको आप 1 मान लीजिए. तो यहाँ पे you will have OH. And इसके 1, 2 carbon. Second carbon यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2-ene. Yeah. So that will be the structure. Chaliye. I hope you have written all of these structures now. 1, 2, 3, 4. Yes, sir. And apologies for those who are not interested in cricket. Okay. I don't know whether Amna, Iran, I think he is, Padeja, and okay. Just give me a second, okay, guys? I need to have a call right now. Actually, that troll guy, I have to report it to the Learnivio team.
Sorry for that. And actually, yeah, please write the topic isomerism. Isomerism. What is isomerism? Achha, just a second. Khadija, am I audible? Khadija, Bashir, am I audible? Yes, sir. Khadija, are you trying to enter from any other device? No, sir. No, na? ठीक है. Okay. Please write. What is isomerism? It's a phenomena. Please write phenomena where two compounds have same molecular formula but different physical and chemical properties. Physical and chemical properties. Okay. And similarly, you will write compounds that have same molecular formula but different physical and chemical properties are called आइसोमर्स. भाई ये कौन है भाई? ये हमारे क्लास में इतना ज्यादा इसको क्या इंटरेस्ट हो गया है? ये फिर अब अलग नाम से आ रहा है. और हयान अब्दुल्ला. Okay, so the compounds which have same molecular formula, they will have same molecular formula, but they will have different properties. Those are known as isomers. Now, isomers are of two types. Isomers जो होते हैं, isomers are of two types. Isomers are of two types. Okay. What are the types of isomers? One is structural isomers. Please write. Amna, are you trying to enter from any other device? No, sir. No, na? ठीक है, fine. Structural isomers. अरे नहीं यार, इसको क्यों ये कर रहा हूँ? Amna, are you there? Yes, sir. ठीक है. Just give me a second. Structural isomers, and then we have stereoisomers. Now, what are structural isomers? बहुत ही आसान सी बात है. Whenever you talk about isomers, ना उसका नाम ऐसे रखा जाता है. See, they will have same molecular formula but different structure. Different structure or networking. आप यहाँ तक different structure is still what you are going to write for the examination. Same molecular formula but different structure are structural isomers. ठीक है? ये networking वाली बात है, ये समझने के लिए. ठीक है ना? What is networking? You will understand that. In this case, you will see that
IUPAC name is different. ठीक है, for example, I have butane. So in butane, I have 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. Correct? Yes or no? Please tell me. Yes, देख sir. लीजिए काउंट करके. ठीक है. Similarly, just okay, Khudeja, fine. If you see this structure, here also I am having CH3, 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 right? Here we are having 3 carbon atoms और यहाँ पे एक carbon atom है तो C4 हो गया. Hydrogen 3, hydrogen 3, hydrogen 3, hydrogen 9, and then 1 hydrogen here. That will be hydrogen 10. So we have C4H10 here also. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. But both of these structures are different and their network is different. क्या मतलब network का? Please देखिए. Carbon atom connected to one carbon. This carbon is connected to another carbon. This carbon is connected to further one carbon atom. But if you see here, this one carbon is connected to one carbon. But now this carbon is connected to 1 and 2 simultaneously. So network अलग हो गया ना. If you are making a type of network, अगर आप join कर रहे हैं dots को, then the network that you are getting is different. Okay. So and also both of these structures will have different names. Stereoisomers, what are stereoisomers? So they have same molecular formula but different arrangement. But different arrangement but different arrangement Khadija, am I audible? Yes, sir. In space. ठीक है, क्या मतलब इसका? प्लीज सी. अच्छा, इसमें क्या होगा? दे विल हैव सेम IUPAC नेम. IUPAC नेम इन दोनों का क्या रहेगा? इफ यू आर हैविंग स्टीरियोआइसोमर्स, दे विल हैव सेम IUPAC नेम, है ना? फॉर एग्जांपल, प्लीज सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. Here you have Br, here you have Br, here you have hydrogen, here you have hydrogen. But in the another structure you have carbon carbon. यहाँ पे आपके पास Br and यहाँ पे आपके पास Br है. Here you have hydrogen and here you have hydrogen. ठीक है, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को. Please don't write anything. See here. If you look at this structure, Br is connected to carbon. देखिए, simply speaking, है ना? Simply speaking, क्या है आपके पास? One carbon connected to Br and hydrogen. One carbon connected to Br and hydrogen. Another carbon is also connected to Br and hydrogen. यहाँ पे भी carbon connected to Br and hydrogen, carbon connected to Br and hydrogen. So there is no difference in the connectivity or the network. Correct है guys? है ना? Network में कोई फर्क नहीं है यहाँ पे. ठीक है? Please see now. ध्यान से देखिएगा. But if I try to calculate the dipole here, if you try to calculate the dipole, Br is more electronegative. तो यहाँ पे delta negative. So there will be a dipole moment like this. There will be a dipole moment like this. And then there will be a net dipole moment resultant जो होगा वो upwards होगा, right? Somewhere like this. Correct? Yes or no? So Yes, this sir. is having mu net that is greater than 0. But if you see this structure, the Br will be having delta negative. So यहाँ पे एक dipole moment इस तरह से होगा. And there will be a dipole moment just in the opposite direction. So both of these dipoles are going to cancel each other. Please see here, guys. देखिए. Both of these dipoles are going to cancel each other. दोनों opposite direction में है ना? So in this case, what will happen? Mu net will be equal to 0. Now, obviously, when the polarity of these compounds are different, so they will have different physical and chemical properties, right? But this difference is not coming because of networking. This is coming because how the Br is placed in the space. ये जब adjacent है और जब ये बिल्कुल opposite sides में है. Is that clear? Yes or no? Please tell me. है ना? Yes. तो ये है ना, connectivity से यहाँ पे difference नहीं आ रहा है. कैसे difference आ रहा है? Because of the placement of Br in the space. ठीक है? Please copy this down. Raise your hand once you're done.
Raise your hand once you're done. Amna, Khadija, and Khadija waiting for you guys. Amna and Khadija. Khadija just waiting for you now. Khadija, are you done? जल्दी करें. Oh, Khadija is not even replying now. Chali. Khadija, are you there? चलिए ठीक है. Right. Structural isomers. So the structural isomers that we have to study is number A, chain isomers. B is position isomers. Number C is functional group isomers. Functional group isomers. Then we have metamers. After metamers, you will write ring chain isomers. And then we have tautomers. You will write A, chain isomers. This is also called skeletal isomers. Sir, what is sixth one? Tautomers. Tautomers. ठीक है. ठीक है. For the most of the cases, you can easily you can remember what is chain isomers or what are position isomers. तो ठीक है. बहुत आसान है. देखिए. What are chain isomers? Same molecular formula but different parent chain. है ना? Same molecular formula but different parent chain. ठीक है. Position isomers, same molecular formula but different position of substituent, unsaturation or functional group. Functional group, same molecular formula but different functional group. Metamers आपको नहीं समझ में आएगा अभी. Ring chain, same molecular formula but one is having ring, the other is having chain. ठीक है. So if for most of the cases you can easily remember the definition, आपको ज्यादा effort लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now for chain isomers, please write same molecular formula. Chain isomers, same molecular formula but different parent chain. But different parent chain. ठीक है. अब देखिए, for example, अगर हम start करें, if I start with one carbon atom, that is CH4. तो obviously बात है ना, CH कार्बन में तो एक ही कार्बन है, right? Meth के अलावा you cannot have anything else, right? You cannot, I mean, you cannot break one carbon and add somewhere else, right? You have only one carbon. Next case, you have CH3 bonded to CH3, that is ethane, two carbon atoms. Sorry. CH3 bonded to CH3. Now, in this case, if you are going to pick one carbon atom like this, और उसको आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे, तो again you are going to get CH3 only. There is no difference, correct? Yes or no? सही है. अब देखिए, तीसरा आपके पास when you are going to have three carbon atoms. In this case,
first carbon is joined to second, second is joined to third. Tell me guys what is happening. First is joined to second and second is joined to third. अच्छा, even if I want to break this, अगर हम मान लीजिए चाहते हैं कि थर्ड कार्बन को निकालते हैं और फर्स्ट कार्बन में लगा देते हैं ना, स्टिल द स्ट्रक्चर इज सेम, है ना, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा ना स्ट्रक्चर में, ठीक है. No, So sir. that is still 3 carbon atoms. We are not going to have any chain isomers. No chain isomers. ठीक है, ध्यान दीजिए. When you are having 4 carbon atoms, ठीक है, in 4 carbon atoms, please see, don't write, okay? 4 carbon atoms में क्या होगा? We will see, don't write, okay? Please don't write 4 carbons. When you are having 4 carbon atoms, then you have one case in which you are going to have 4 carbon atoms in the chain. दूसरा केस आप क्या कर सकते हैं? The second case that you can have is you have 3 carbon atoms in the chain और एक कार्बन आटम को आप ऊपर लगा दीजिए, ठीक है. So here now you can see ना, here also we are having 4 carbons. यहाँ पे भी आपके पास क्या है? 4 कार्बन है. If you want to see the molecular formula, so both of these are having, we have just seen before this, C4H10. दोनों के अंदर क्या है? C4H10. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, ये तो आप लोगों को पता चल गया. अब इसके नाम कुछ है, ठीक है ना. प्लीज सी गाइस, प्लीज सी, डोंट राइट एनीथिंग, ध्यान दीजिएगा. सी, दिस इज ब्यूटेन, राइट? ब्यूटेन. एंड बिकॉज इफ पीपल आर टेलिंग यू C4H10, तो नॉर्मली आपके दिमाग में यही स्ट्रक्चर आएगा 4 कार्बन के लिए, राइट? तो दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल ब्यूटेन और एन ब्यूटेन. इज दैट क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी. क्या नाम है Yes. इसका? N-butane. है ना, एन ब्यूटेन. और एन ब्यूटेन से बिल्कुल सिमिलर, मतलब ब्यूटेन का साथी क्या है? आइसो. आइसो मतलब सेम होता है ना, आइसो ब्यूटेन. ये क्या है? आइसो Isobutane. ब्यूटेन. If you want the IUPAC name, this IUPAC name is going to be 2-methyl propane, है ना. ये मेन चेन हो जाएगा और एक मिथाइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, 2-methyl. The second carbon atom we have methyl group. Now you can see that here we have the parent chain as but, here we have the parent chain as prop. So what is different? The parent chain is different. Is that clear? Yes or no? Please tell me guys. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा. In the butane, we have 2 different types of carbon atoms. This is very important again. ठीक है ना, ध्यान दीजिए. Very important. This carbon atom is same as this carbon atom. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. And this carbon atom is similar to this carbon atom. Correct है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए जो blue carbon atoms है ना, this blue carbon atom is connected to how many carbons? Tell me. Directly connected to 1. इसको बोलते हैं 1 डिग्री. क्या बोलते हैं इसको? 1 degree. है ना. Similarly, this blue is also connected directly to 1 carbon atom, so this will also be 1 degree. 1 What degree. about the red carbon? Red carbon कितने कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली? 2. 2. एक ब्लू से और दूसरा रेड से, है ना. इसको क्या Yes, बोलेंगे? 2 डिग्री. और ये भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री. ठीक है. अब बताइए, व्हाट इज दिस? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 1 डिग्री? degree. 1 degree. 1 डिग्री. व्हाट रशिता? Yes, sir. 1 degree. 1. व्हाट अबाउट दिस वन? 1 1 degree. degree. ये भी. अरे आमना, आपकी आवाज नहीं आ रही. आमना, खदीजा, खुदीजा, आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही. व्हाट हैपेंड गाइस? आमना, यस सर. समझ में आ रहा है? जी. तो आंसर करें ना. चलिए ये बताइए आप, इस कार्बन की क्या डिग्री हो जाएगी आमना? 3. वेरी गुड. आसान है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं किसी को. दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस वन इज 3 डिग्री. ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा. इफ अभी तो बात हो रही थी पेरेंट चेन की, ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए गाइस. इफ दिस ग्रुप, ये जो पूरा ग्रुप है आपके पास 4 कार्बन का, अगर ये ग्रुप इज अटैच्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ व्हाट? टेल मी गाइस. इट इज अटैच्ड एज अ, Substituent. इट इज अटैच्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो ये 2 सिनेरियोज में अटैच हो सकता है, 2 तरीके से. कैसे? लेट मी शो यू गाइस. इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं. इट कैन बी अटैच टू दी, अब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो किसी पेरेंट के साथ अटैच होगा ना. पेरेंट के साथ जब अटैच होगा तो 2 तरीके अटैच होने के. आइदर इट इज बॉन्डेड टू द 1 डिग्री कार्बन, आपके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन सा है?
द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दैट यू हैव इज वन ऑफ दी 1 डिग्री कार्बन, है ना, ये ऐसे कहीं पे लगा हुआ है. इज दैट क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी. सही है. Yes. जब इस तरह Yes, से sir. लगा रहेगा तो इसको बोला जाएगा दिस इज एन ब्यूटाइल. क्या है बताइए? दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल. दिस इज एन ब्यूटाइल. ठीक है. नाउ इफ इट इज कनेक्टेड टू सम पेरेंट चेन via 2 degree carbon, point of attachment is what? It is the 2 degree carbon atom. Then this is known as, इसको कहते हैं sec butyl. क्या बोलते हैं इसको? बोलिए गाइस. Sect butyl. sec butyl. SEC sec butyl. ये देखिए जो 1 है ना, 1 जो था आपका, दिस 1, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी. क्या बोलते हैं? प्राइमरी. Primary. ठीक है. 2 को बोलते हैं सेकेंडरी. क्या बोलते हैं 2 को? बोलिए गाइस. 2 को क्या बोलते हैं? Secondary. है secondary, ना. तो वही सेकेंडरी, तो वहीं से आया सेक जो आया है ना, सेक इज फ्रॉम सेकेंडरी. सेकेंडरी. एनी आइडिया 3 को क्या बोल देंगे? Tertiary. tertiary, वेरी गुड, टर्शियरी. ठीक है, 3 को टर्शियरी बोलेंगे. ओके. नाउ लेट अस सी, इन दोनों का हम एग्जांपल्स में भी आपको शो कर देते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव साइक्लोहेक्सेन का हम एग्जांपल ले रहे हैं. यू हैव साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में आपके पास 1 2 3 4 कार्बन्स लगे हुए हैं, राइट. ये 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको? ये सुनो. Yes, sir. Yes, sir. है yes ना. sir, एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज 1 डिग्री. करेक्ट है. Yes, इसका sir. नाम जो Yes, लिखेंगे sir. आप यहीं पे देखिएगा. द नेम विल बी एन ब्यूटाइल. जस्ट अ सेकंड, इतना छोटा लिखना मेरे यहाँ पे पॉसिबल है. टाइप इट आउट. एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. And butyl cyclohexane. Now, if I draw this structure, it will look something like this. We have cyclohexane, let's say cyclohexane, and now the point of attachment is 2nd degree carbon. Second. So थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा. Now tell me, ये कितने कार्बन अटैच है? How many carbons are attached here? Tell me guys. 2. 2. 2 कहां से रे भाई? गिनो जरा कितने कार्बन अटैच है ये पूरे? Sir, 1, 2. 4, 4 है ना भाई. 1 2 3 4. आकिब. Yes, sir. हाँ, it is Sir, 4 कार्बन. Oh, Four है, okay. है ना. 4 है. बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सी दिस कार्बन आटम. इस कार्बन आटम की इस ग्रुप में डिग्री क्या है? लाइक व्हाट इज द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? 3 नहीं, degree. इस ग्रुप Three. में, इस ग्रुप नहीं, सिर्फ इस ग्रुप में 2. 2 2, है ना. हाँ, तो ऐसे देखना. तो दिस इज सेक ब्यूटाइल. बात समझ में आई? बात समझ में आई? दिस इज व्हाट, दिस अटैचमेंट विल बी सेक Sir, can ब्यूटाइल. you repeat it? हाँ, एक सेकंड. साइक्लोहेक्सेन. रिशिता, दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप, राइट. 4 कार्बन तो ब्यूटाइल होगा, Yes, sir. है ना. और लेकिन ब्यूटाइल था, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? इट इज द सेकेंडरी कार्बन, राइट. Yes, sir. जैसे ये, वैसे यही वाला केस हो गया ना, सेक ब्यूटाइल वाला जो हमने लिखा था. देखिए, इवन दो इट इज लुकिंग अ बिट डिफरेंट, भले ये थोड़ा सा अलग लग रहा हो आपको, बट इट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. देखिए आप ऊपर नीचे मत देखिए कैसा दिख कैसा रहा है, उसके ऊपर मत जाइए. ठीक है ना. ऑर्थोमेटा पैरा वाला केस है, आंखों में धोखा हो सकता है आपको. ठीक है ना. सो यू विल सी इट इज 2 डिग्री कार्बन. तो यहाँ पे भी क्या है? दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज 2 डिग्री. सो इफ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज 2 डिग्री, तो क्या हो जाता है? सेक ब्यूटाइल. गॉट इट? Yes, sir. ठीक है ना. चलिए, Yes. उसी तरह से सिमिलरली लाइक दैट ओनली फॉर आइसोब्यूटेन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है दैट वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स. करेक्ट है ना. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इनके लिए भी क्या होगा? यू विल हैव 2 टाइप्स ऑफ, इफ दे आर प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे.
इफ आई हैव समथिंग, देखिए आई एम मेकिंग सम, थोड़ा आपको अलग लगेगा स्ट्रक्चर, लेकिन आई थिंक देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है आपके पास, सेम स्ट्रक्चर है ना ये दोनों, वो तो दी स्ट्रक्चर्स आर सेम ना, Yes, sir. सेम है, सेम दिखा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में ये नहीं होता, डैश नहीं होता, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। एंड द अदर केस इज, थोड़ा आपको फिर से अलग लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, 4 कार्बन आटम दिखे, 1 2 3 4, 4 कार्बन आटम्स दिखे आपको। Yes, sir. Yes. नाउ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज दिस 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसको बोला जाता है टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, यू विल हैव साइक्लोहेक्सेन, और ठीक है, सी दिस ग्रुप, सेम है ना, आइसोब्यूटाइल ग्रुप दिखा आप लोगों को इसोनोप्रीसल में, दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ऑल ऑफ Yes, द sir. कैन यू सी आइसोब्यूटाइल, है ना। सिमिलरली दिस इज टर्ट ब्यूटाइल, Yes, ठीक है। sir. दिस इज आइसोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, this is tert butyl cyclohexane, Sir, can you write? sure, please write. So can you scroll a bit up? Yeah, sure. Raise your hand once you're done.
Adija, just take a screenshot. आपको बहुत डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. ऑल्सो आई मीन वो छोड़िए, अब क्या बताएं आपको ठिकाने. देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा. हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर व्हेन यू हैव 4 कार्बन्स? टेल मी गाइस. C4H10 के कितने आइसोमर्स हैं? 2. 4 2 नहीं, 2 है. ठीक है रचिता. yes sir ठीक है रचिता. देखिए ये जो पार्ट है ना आपका एन ब्यूटाइल सेक्स ब्यूटाइल, ये आइसोमर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना. दिस शुड बी एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड व्हेन वी वर डूइंग सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज यू सी मतलब व्हेन वी ट्रीट दिस एज सब्स्टिट्यूएंट, राइट. बट आपको ये समझ में आ रहा है, इट विल नॉट बी वेरी लॉजिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट व्हेन यू वर डूइंग नॉमेनक्लेचर, है ना. That is why I introduce this type of substituent when we are doing isomers. क्योंकि isomers से ही ये चीज निकल रही है, right? When we have degrees of carbon, 1 degree, 2 degree, 3 degree वगैरह. So whatever we are writing as substituent ना, ये सारी चीजें जो हैं, these are not part of your isomers. Isomers दो ही हैं, N-butane and isobutane. ठीक है? We'll write next for 5 carbon atoms. So when you have 5 carbons, you will have C5 and there will be hydrogen. How many? Tell me guys. H12, right? yes sir. C5 H12 है ना. एक तो आपके पास आ जाएगा नॉर्मल पेंटीन, ठीक है. Then there will be another in which you will have 1 2 3 4 carbon atoms. आप देखिए 4 कार्बन जब थे आपके पास, when you had 4 carbons, you did it 3 carbons, right? Now you have 5 carbons. आप उसको एक चेन में घटा दीजिए. Now you have 4 carbon atoms और कहीं पे आप मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, राइट. देन एक और रिड्यूस कर लीजिए 3 कार्बन एटम्स, देन पुट द मिथाइल ग्रुप ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम लाइक दिस. सो यू हैव 3 आइसोमर्स. एक तो है आपके पास पेंटीन. दिस इज नोन एज, इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटीन, और इसका नाम है आपके पास नियोपेंटीन. When we write the IUPAC name, the IUPAC name for this structure will be 2-methyl butane. 2-methyl butane. Neopentane जो होगा that will be 2,2 dimethyl propane, है ना. This is your main chain. 3 कार्बन का, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, राइट. सो यू हैव 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. ठीक है. अब इसमें से ना ये वाला जो नियोपेंटेन ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ नियोपेंटेन इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, यू हैव साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. साइक्लोहेक्सेन लेने का मकसद ये है कि हमको पेरेंट अनसैचुरेशन वगैरह के लिए फोकस उतना ना करना पड़े, है ना. दैट इज व्हाई आई टेक साइक्लोहेक्सेन इन द एग्जांपल्स. ठीक है. सो एंड इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो यू कैन सी इन द सब्स्टिट्यूएंट हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. कैन यू काउंट द कार्बन एटम्स इन द सब्स्टिट्यूएंट? कितने कार्बन हैं? 5. 5. नियोपेंटेन में जैसा है ना. हाँ. Yes. सो दिस इज नियोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन. नियोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये तो आपके लिए आसान हो गया. आपको Yes, कभी sir. कभी So इस there तरह से, सॉरी so रशिता. there are 3 types of isomers in 5 carbon atom, C5H12. या C5H12, या करेक्ट. Okay. 3 टाइप्स है यहाँ पे. ठीक है. इसका नाम हो जाता है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड. 1 2 3 4 है ना. नियोपेंटाइल कॉमन नेम है, लेकिन ये सारी चीजें नियोपेंटाइल ब्रोमाइड. सो व्हेनेवर यू हैव, देखिए आपको ये नाम दिया जाएगा, देन यू शुड नो दिस स्ट्रक्चर.
ठीक है. If you have been given this structure and you are being asked the name of this structure, then you will not write neopentyl. You will write whatever IUPAC name you know, जिस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है. But if neopentyl bromide is given, then it is your responsibility to know that, okay, fine, this is the structure of neopentyl bromide. So the examiner and the NCERT can give you the names in common name as well as the IUPAC name. ठीक है, नाम वो दोनों में दे सकते हैं. But if they are asking you the IUPAC name, आप IUPAC name ही डालिएगा. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Done. Yes, sir. ठीक. आमना हुआ आपका? आमना, you are very silent today. See here, guys. Second, now for 6 carbon, 7 carbons आपके पास नहीं पढ़ना है, 5 carbons तक ही पढ़ना है आपको. ठीक है. Second is position isomers. Please write position isomers. ठीक है. What are position isomers? Similar, same molecular formula, but differ in the position of functional group or double bond or triple bond or substituent. Okay. Yes, sir. देखिए, ये आपके स्टार्ट हो जाएगा 3 कार्बन में ही, है ना. देखिए 1 2 3 कार्बन एटम्स वी हैव. अगर इफ यू हैव, देखिए अगर आप देखेंगे ना 3 कार्बन एटम को, तो यहाँ पे दिस कार्बन, अरे यार मेरा क्या, दिस कार्बन इज 1 डिग्री और 2 डिग्री. बोलो भाई. 1 degree. What about this carbon? What about this carbon? 1 degree. What about this carbon? 2 degree. 2 degree. 2 degree. डिग्री, है ना. तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास 1 डिग्री में लगा हुआ है इस तरह से OH. ठीक है. तो इसको देखिए, एक तो आपका IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑल. ठीक है. बट द कॉमन नेम फॉर दिस विल बी प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, ध्यान दीजिए. यहाँ पे देखो, इसके लिए आप क्या लिखिएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपेन टू ऑल. तो 1 ऑल से क्या हो गया, 2 ऑल तो पोजीशन हैज चेंज. इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. दिस इज द कॉमन नेम. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. अब देखिए कॉमन नेम हम लिखाते जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए. ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल वगैरह ये सारी चीजों के बारे में. सिमिलरली इफ आई हैव अनसैचुरेशन की अगर हम बात करें, so this is but 1-ene, this is but 2-ene. Can you see there is a difference in what position? Correct है guys? बोलो. Yes, sir. ये बात तो सही है ना. ठीक है. Similarly if you have something like this, this will be 1 chloropropane, this will be 2 chloropropane. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, आर दीज पोजिशन आइसोमर्स? देखिए गाइस, आर दीज टू पोजिशन आइसोमर्स? Yes, sir. What will be the name of the first one? Tell me, Rishita. Cyclo
Bromo. नहीं, substitute. हाँ, ब्रोमो, 1 ब्रोमो. 1 bromo cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन. व्हाट अबाउट दिस वन? इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 bromo cyclohexane. Why 2 ब्रोमो? Because it's at the down. डाउन. ऐसा होता है क्या? What is the criteria for numbering, Rishita? Uh, Sir, if there's हाँ. okay, they won't हाँ. be the same. Sorry. They will. It'll be one only because they are हाँ. all okay. 1 1 bromo. bromo So are cyclohexane. these isomers? Tell me, or are they same structure? No, sir. What? No, sir. Are they are same They structure, are na? same structure. They are हाँ. isomers. They are not isomers. Yeah, correct. Okay. ध्यान रखिएगा. So these are not isomers. Same structure. Okay. Let me tell you one more. What about? तो आप नाम लिखेंगे जैसे ही ना, तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा. If I have Br here and Cl here, and if you have Br here and chlorine here, what about now? Tell me, guys. Are these position isomers? Yes, sir. क्या ख्याल है बाकियों का? नाम लिखिए आप लोग. दिस इज वाई नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइसोमर्स में भी है ना, आपको नेमिंग अगर आती है अच्छे से, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन वेदर द टू कंपाउंड्स गिवन आर आइसोमर्स और दे आर नॉट आइसोमर्स. ओके, चलिए इसका बताइएगा आप लोग. हाँ, टेल मी व्हाट आर द नेम्स these two structures and send the answers on my WhatsApp. Oh, Akib, did you fall down or something? नहीं. अच्छा, ठीक है. आप ऐसे इतना अचानक से स्क्रीन से बाहर चले गए, मतलब कैमरा के व्यू से, that I thought you fallen, she fell down or something. ठीक है. Write नहीं, the sir. name of these two structures and tell me whether they are isomers or not, है ना? If they are isomers, they will have different names. So they do have different names. They do have different names. Can you send me, Rishita, what you have done? Yes. Sir, I didn't actually name them because I just found out that there's one carbon atom between Br and Cl in the second one. So their अच्छा, तो name will be. नंबर अलग होगी, राइट? तो नाम तो देखिए, अब ना देखिए ऋषिता, थोड़ा सा ना अब ना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा नाम के लिए. व्हाट इज द पेरेंट? टेल मी, पेरेंट क्या हो जाएगा? Cyclohexane. हाँ, साइक्लोहेक्सेन. और क्या लगा हुआ उसमें? ब्रोमोस और क्लोरो, राइट? तो Or ब्रोमो को chloro. मिलेगा नंबर 1, क्लोरो को मिलेगा 2, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, राइट? सो द नेम विल बी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो cyclohexane. For this it will be 1 bromo 3 chloro got it?
Yes, sir. डन गाइस? हाँ, Yes, आमना sir. आके देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लास्ट तीसरा लिखिए, उसके बाद फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. प्लीज राइट थर्ड वन, मेटामर्स. प्लीज राइट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different alkyl groups, are present on either side of bridging atom और functional group. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, प्लीज देखिए. दिस हैपेंस ओनली इन 3 peculiar cases. एक आपका आएगा ईथर्स के केस में, दूसरा आएगा आपका कीटोन्स के केस में, और तीसरा आएगा आपके पास अमीन्स के केस में. Here ethers and ketones are more important. अमीन्स का स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने. ठीक है, these are more important in the cases of ethers and ketones. ठीक है, amines उतना ज्यादा आपके लिए अभी important नहीं है. Please see. So what are ethers? Ethers have a general formula where you have alkyl group attached with oxygen, which is further attached to another alkyl group. ठीक है, तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए you have one carbon atom like this. See here guys. See here. Here you are having, this is methyl group, right? Correct. What is this? Yes, sir. Methyl. What is this? 1, 2, 3 carbon atom. Check. Propyl. Propyl. This will be very good. Propyl. ठीक है. And this compound is ether. This compound क्या है? ये compound क्या है? Ether बोलते हैं इस compound को. ठीक है. If you have this type, oxygen बीच में और दोनों तरफ alkyl groups हैं. JALM. So this will be named as methyl propyl. ये लास्ट क्लास में क्या था नाम लोगों ने? ईथर, है ना? अरे Yes, क्या sir. नहीं था क्या हम लोगों ने? क्या था ना? Yes, ठीक है, sir. ध्यान दीजिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन, यू हैव C4 H10 एंड O. सही है, देखिए काउंट करके देखिए. C4 H10O है. अरे Yes, sir. भाई, अब ध्यान दीजिए. आई कैन हैव द सेम C4 H10O. देखिए CH3 CH2, करेक्ट. 2 कार्बन Yes, sir. 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 10, है ना? और बीच में एक आपके पास ऑक्सीजन एटम, राइट? बीच में आपके पास एक ऑक्सीजन एटम. सो दिस पर्टिकुलर compound is also having the same formula, that is C4H10 and then 1 oxygen atom. But here both the groups are what? Ethyl groups. क्या है? यहाँ भी ethyl और इधर भी ethyl. तो बेसिकली नाम क्या हो गया? दिस इज डाईइथाइल, Ether. है ना? सो आपने देखा व्हाट इज द डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इन द राइट एंड द लेफ्ट साइड आर डिफरेंट. करेक्ट है गाइस?
Yes, sir. है ना। अब देखिए सेम टाइप की चीजें हो जाएंगी आपके पास कीटोन्स में भी, C डबल बॉन्ड O, सो यू कैन नेम दिस एज, दिस इज इथाइल, दिस इज आल्सो इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाईइथाइल Diethyl कीटोन, ketone. है ना। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दिस इज Methyl मीथाइल, and और propyl. हाँ, तो दिस विल बी मीथाइल प्रोपाइल ketone. If you look at the formula is going to be, in both the cases it will be C5H10, ठीक है, C5, सॉरी हाँ, दो देखिए यहाँ पे 3 2 5 हाइड्रोजन तो इतना ही है, 10 हाइड्रोजन, 5 कार्बन एंड देन 1 ऑक्सीजन। हियर आल्सो इट विल बी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन एटम्स, 5 carbons, 3 plus 0, 3 plus 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H10 and oxygen, ठीक है। amines के केस में देखिए, you have NH2 like this, so nitrogen is attached with propyl group, आप कम कर दीजिए, आपके पास हो गए 2 कार्बन एटम्स, then nitrogen, and this nitrogen atom, it is now attached to 1 CH3 and 1 hydrogen, और एक केस में क्या हो सकता है, दिस नाइट्रोजन एटम इट इज अटैच्ड विद 3 मिथाइल ग्रुप्स। इफ यू लुक एट द फॉर्मूला, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू हैव, आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू हैव द फॉर्मूला दैट इज C3H9 एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सो C3, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 7 8 9, H9 एंड देन नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, you have 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, राइट, सो you have C3, here we have 3 कार्बन 2 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ और 3 कार्बन यहाँ, और यहाँ 1 कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, माय बैड गाइस, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, राइट, सो 3 plus 3 is 6, 2 plus 1 is again 3, that is equal to H9, and then what, a nitrogen atom, यहाँ पे तो आपने देख लिया C3H9 है। Is this clear? Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. ठीक है, तो मेटामार्स तक आप लोग रिवाइज करके रखेंगे। वी विल मीट अगेन ऑन ट्यूसडे मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।